वाह। मिलिंद येवले जी का एक सवाल है, आई एम डूइंग गुड इन पर्सनल लाइफ एज वेल एज इन माई प्रोफेशनल लाइफ. That is his business, and I was super happy, but then started finding my uh, WHY or purpose, why or purpose, and I got confused. After 1 year, I removed this thought out of my mind, keep doing what I love in my business, and I am back to track now. But still can't formulate sentence of why or purpose. Will this affect my long-term growth? क्या नाम था इनका? सर का नाम क्या था? Milind Yevli. मिलिंद, आई थिंक आपने ना जो स्टेप लिया अपना पर्पस और वाई निकालने का, आपने ट्राई करा और इट डिडंट वर्क आउट, राइट? एंड इनफैक्ट इन क्लैरिटी आई टॉक अबाउट दिस पार्ट. क्लैरिटी ना आपको एक बारी में नहीं मिलती, ठीक है? उसको ना सर्कल करना पड़ता है. आपको एक बारी लाइफ पर्पस मिला, उस पर घूमोगे आप, राइट? इट टेक्स टाइम. एक सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, 4 सर्कल. इनफैक्ट व्हेन आई स्टार्टेड लुकिंग एट माय लाइफ पर्पस एंड माय वाई, like I said, is walk with young in their pursuit of happiness, success. ये मेरा फर्स्ट वर्जन ही था. This is probably my third version. Okay. पहले मैंने कुछ और बनाया था. उसके अंदर यंग का मतलब उस टाइम मेरे पास था. यंग का मतलब आई एम बाय द वे 54. सो उस टाइम मेरे पास था कि मैं यंग मतलब यंग एंटरप्रेन्योर्स, 20 साल 25 साल टीनेजर्स, उनको कोच करूंगा, बिकॉज उससे एनर्जी आई. तो मैंने अपने डॉक्यूमेंट में लिखा था यंग मीन्स लेस देन 30. फिर मैंने किसी को कोच करा, वो 55 ईयर्स के थे, डॉक्टर थे, और आई कुड हेल्प हिम गेट क्लैरिटी. तो मेरे को लगा मैं अपने आप को क्यों रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ यार, मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा. सो आई चेंज माई डेफिनेशन ऑफ माई पर्पस. द डेफिनेशन ऑफ यंग आई चेंज टू से एनीबडी हु हैज अ ड्राइव टू चेंज, हु इज रेडी टू इवॉल्व, हु इज रेडी टू इम्प्रूव, वांट्स टू ब्रिंग अ चेंज. दैट्स माई डेफिनेशन ऑफ यंग. सो what will happen in this case is you'll go through multiple cycle, right? And then you'll find the real why, and you have to stay with it maybe for 6 months, 12 months. No, you have to stay with it. Is it staying? If it's not, maybe it's time to refine, to revise. And when you get that, your growth will be much faster. You will grow without it. 90% of people do not have the life purpose clear, but they keep on growing. That happens. But if you have clarity of life purpose, you will grow faster, accelerate your growth. That will happen. All right.